So we have determined an expression for the collector current. IC is equal to IS exponential of VBE divided by VT. And next we would like to determine expressions for base current and the emitter current. उससे पहले हम ज़रा साइंस की कन्वेंशन डिटरमिन कर लेते हैं. देखिए कलेक्टर करंट हमने कहा है कि इट इज़ इनटू द कलेक्टर बिकॉज collector current is comprised of these electrons and these electrons are flowing out of the collector terminal, and since electrons are negative, so conventional current has to be taken in the opposite direction. So IC is inverse because electrons are flowing out of the collector terminal, so IC is into the collector terminal. IB के केस में आपके पास दो parts हैं. IB is comprised of two parts. The base current has two parts, IB1 and IB2. So IB is IB1 plus IB2, and both are comprised of holes entering into the base terminal. So IB should be in the same direction because holes are positive. So IB के केस में दो हिस्से हैं, दोनों होल करंट हैं. So as a consequence IB same direction में, so IB is inverse. होल करंट के कौन से दो पार्ट्स हैं? IB1 is because of the forward biased emitter base junction. IB1 is because of forward biased emitter base junction, while IB2 is because of recombination. जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि when the electrons enter into the base region, since base region is p-type region with abundance of holes available, so some of the electrons will have an opportunity to recombine with the holes already present, and as a consequence the electron hole pair will disappear. So वो जो electrons disappear हो गए उन्हें compensate करने के लिए you will provide this base current component called IB2. So IB2 is because of the recombination. So there are two components of the base current, IB1 and IB2. Both are whole currents and both are entering into the base terminal. So the resulting current IB is also into the base terminal. Emitter current में देखें, emitter current में if you look here, so you have two parts here. This is electron part and this is the part because of holes. So electron के लिए current की direction क्या होगी, जरा देख के बताइए. holes के लिए क्या होनी चाहिए? क्या दोनों parts का direction out of the emitter terminal है या किसी की into the emitter terminal है? What do you expect? emitter current के दो हिस्से हैं. This is part 1, this is part 2. Part 1 is because of the electrons getting into the emitter terminal and then traveling to the collector terminal. Part 2 is because of the holes. Holes are getting into the base terminal and then into the emitter and then out of the emitter terminal. So what is the expected direction of current because of these two parts? Sir, out of the emitter. दोनों केसेस में आप देखें वो आउट ऑफ द एमिटर होना चाहिए, राइट? ये बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इनटू द एमिटर टर्मिनल, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, सो करंट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. होल्स आर flowing out of the emitter terminal and holes are positive, so current should be then in the same direction. So IE has two parts, both are flowing out of the emitter terminal, so that's why IE की हमने ये direction label की है. ठीक है, so let's focus on the base current first and then we will determine an expression for the emitter current. So base current के दो parts हैं. We have IB1. IB1 is because of the forward biased emitter base junction. So naturally IB1 has to be proportional to exponential of VBE by VT. So IB1 ये N plus emitter है, ये P है, ये N type collector है. So IB1 is because of forward biased emitter base junction. So it is an indicator के emitter base junction forward biased है, which means barrier is sufficiently low, so holes in the p-type region have an opportunity to diffuse into the emitter, and that diffusion process is governed by this exponential relation where VB is the forward voltage across the base emitter junction. So IB1 must be proportional to exponential of VBE by VT. अब IB2 किसके साथ proportional है? Let's take a look. IB2 is because of the electrons that have been made available in the base region. ठीक है, IB2 इसलिए एक recombination है. तो recombination इसलिए हो रही है कि आपने यहाँ पर एक large number of electrons available कर दिए in the p-type base region.
सो IB2 मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू NP ऑफ 0, कि आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल की है। अगर ज़्यादा लार्ज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल करेंगे तो लार्जर अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू रिकम्बाइन विद द होल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पी टाइप बेस रीजन। तो NP ऑफ 0 जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपको IB2 मिलेगा, बट NP ऑफ 0 इज प्रोपोर्शनल टू exponential of VBE by VT. So in other words, we are saying that IB2, although is because of recombination, but indirectly, since IB2 is proportional to the carrier concentration that has been made available in the base region, so indirectly IB2 is also proportional to the same exponential as IB1. So IB2 is also proportional to exponential of VBE by VT. So we have IB1 proportional to exponential of VBE by VT. We have IB2 that is also proportional to exponential of VBE by VT. So their sum must also be proportional to the same entity. So that means IB is also proportional to exponential of VBE by VT. Okay, so this is what we have concluded. We have concluded that the base current is proportional to exponential of VBE by VT. जो ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन एक निकाल चुके हैं वो कलेक्टर करंट के लिए हमने निकाल ली है, IS exponential of VBE by VT. So we see that कि IC is also related to the same exponential. So in other words, we can say that कि IB is proportional to IC. So IB is proportional to IC. And let's define the proportionality constant as 1 over beta. So we have IB is equal to 1 over beta times IC, where beta is equal to IC over IB. So beta is called common emitter current gain. Why? Because अगर आप emitter terminal को reference ले लें और बाकी दो currents का comparison कर लें तो we get beta. So beta is called common emitter current gain. Current gain because it's a ratio of two currents, and common emitter because you are taking emitter as the reference and comparing rest of the two currents. So beta is IC over IB. For proper operation of the transistor, beta has to be large. In other words, IC should be large relative to IB, or in other words, IB की दोनों terms को smaller होना चाहिए relative to IC, which we achieve. IB1 को हम small achieve करते हैं relative to IC by ensuring that emitter is strongly doped. IB2 को हम small achieve करते हैं by ensuring that this base width is small, base is thin. If base is thin, IB2 will be small, and if emitter is strongly doped, IB1 will be smaller relative to IC. So we are saying that IB is proportional to exponential of VB by VT, and the proportionality constant here is 1 over beta, where 1 over beta is the proportionality constant, which means IB is equal to IC over beta, and since IC is IS exponential of VB by VT, so IB can be written as IS over beta times exponential of VBE by VT. So to keep I1 small, we ensure that emitter is strongly doped, is N plus relative to the p-type base region. This will ensure that IB1 is very small relative to the collector current IC. So this is ensured by setting emitter doping to a higher level relative to the p-type base region. IB2 को आप किस तरह small रखते हैं? IB2 को small रखने के लिए keep the width small. So if you keep the width small, अगर base width को आप small रखेंगे, then the number of electrons that will recombine in the base will be small, and as a consequence the recombination current here IB2 will be small relative to IC. तो ये second condition भी आपकी meet हो जाएगी. And when IB1 and IB2 both are small relative to IC, then we can conclude that the cumulative effect of the base current IB will also be smaller than IC. और in other words beta will be large. तो ये हम deliberately ये चीज़ हम ensure करते हैं कि बीटा आपको large मिले. So n plus रखते हैं या width को thin रखते हैं. ये दो काम करके we ensure that you get a large beta in a practical BJT.
एक्सक्यूज मी तो सर। बीटा इज अ ट्रांजिस्टर। जी जी। सर सर ये जो IB1 करंट है हमारे पास, ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स? IB1 होल्स की वजह से। तो सर जब हम N+ को स्ट्रांगली डोप करेंगे तो फिर तो ये फेवरेबल नहीं है होल्स के लिए उधर मूव करना। होल्स का कम कम होना हमारे लिए एडवांटेजियस है। हम चाहते हैं कि आईसी जो है लार्ज रहे आईबी से। देखिए ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि IB1 should be small relative to IC, and since these electrons will form the collector current, so if we want कि IC large रहे relative to IB1, this is तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसको n प्लस करें। so this is preferable कि कम number of holes diffuse हों from P to N region, while large number of electrons diffuse हों from N to B। इसकी प्रैक्टिकल रीजनिंग ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक्टिव मोड की हम बात कर रहे हैं। सो एक्टिव मोड इज यूज्ड फॉर एन एम्पलीफायर एप्लीकेशन। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल हियर कि आपके पास एक माइक्रोफोन है, ठीक है। उसके बाद एक आपने बीजेटी से एक एम्पलीफायर बनाया हुआ है जिसने किसी लाउड स्पीकर को ड्राइव करना है। सो ये RL इज सम लाउड स्पीकर। अब आप इमेजिन करें कि यहाँ पर आपका ये कंपेरेबल है आईसी, ये आउटपुट, ये दिस इज बेसिकली आईसी एंड दिस इज बेसिकली आईबी। ठीक है, तो हम ये एम्पलीफायर बीच में लगा क्यों रहे हैं? हम इसीलिए नहीं लगा रहे, इसलिए लगा रहे हैं ना कि दिस आईबी कैन नॉट ड्राइव द लाउड स्पीकर डायरेक्टली। यू कांट कनेक्ट द माइक्रोफोन टू अ लाउड स्पीकर डायरेक्टली टू अचीव सम फेवरेबल रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज जो आपका माइक्रोफोन है वो एक लो पावर का सोर्स है, विच मीन्स कि वो उसकी करंट ड्राइविंग कैपेबिलिटी इज़ क्वाइट स्मॉल। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट कि आप उसको एक आइसोलेट कर सकें। जो लोडिंग का इफेक्ट सोर्स के ऊपर है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। दिस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ IB इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल रिलेटिव टू IC। सो अगर IB स्मॉल है, IC लार्ज है, तो देन यू कैन गेट मच बेटर रिजल्ट्स। तो आपने इसके ऊपर लोडिंग का, माइक्रोफोन के ऊपर या जो भी आपका सोर्स है, लो पावर सोर्स है, उसके ऊपर अपने लोडिंग का इफेक्ट मिनिमाइज कर दिए। वाइल IC जो है आपका लार्ज है, सो दैट कैन ड्राइव द लाउड स्पीकर एंड यू कैन गेट सम ऑडियो आउटपुट हियर। सो इस किस्म की टिपिकल एप्लीकेशन, अगर IB और IC कंपेरेबल होगा तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। फिर वो उसी तरह की परफॉर्मेंस ही आपको मिलेगी जिस तरह की सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन से मिलनी थी। सो दैट डिवाइस वोंट बी ऑफ मच यूजेबल एज एन एम्पलीफायर। सो इस तरह आपने लो पावर सोर्स को जब से किसी चीज़ को ड्राइव करना है, सो फॉर दैट पर्पज यू नीड एन एम्पलीफायर, एंड एम्पलीफायर मस्ट हैव हायर आउटपुट ड्राइविंग कैपेबिलिटी। So that's why we want कि IB is significantly small relative to IC, the collector current. ओके सर। जी ये ठीक है, ये आंसर हो गया। यस। Okay, so beta is a transistor parameter that we require to be a large entity, and for practical NPN transistors, by ensuring that emitter is strongly doped, by ensuring that base is thin, practical values that are achievable are in the range of 50 to 200. So एग्जैक्ट आप डेटा शीट जब किसी भी बीजेटी की उठाएंगे तो उसमें एग्जैक्टली वैल्यू हम रीड कर सकते हैं, बट दिस इज अ टिपिकल रेंज जिसमें बीटा की वैल्यू मिलती है। सो फॉर टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो हम टिपिकली बीटा को 100 लेके सॉल्व कर लेते हैं, एंड दैट वुड गिव अस रीजनेबल रिजल्ट्स। सो अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें बीटा का आपको आइडिया नहीं है तो टिपिकली रफली 100 के अराउंड ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स बीटा दे देते हैं। सो वी टिपिकली टेक द डिफॉल्ट वैल्यू एज 100 एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। नेचुरली अगर आपको प्रॉब्लम में एग्जैक्ट वैल्यू बीटा की दी गई है तो फिर आप उसी वैल्यू को लेकर चलेंगे। So beta is called common emitter current gain, and to obtain high beta, already we have considered that IB1 has and IB2 have to be reduced to obtain high value of beta. To reduce IB1, emitter is heavily doped, base is lightly doped. To reduce IB2, base has to be thin. So W small अगर आप रखेंगे तो lesser number of electrons will have an opportunity to diffuse, to recombine, and majority will reach at the depletion region of CBJ, forming the collector current. So reducing IB1 and IB2 is a fundamental requirement to have a practically usable NPN transistor. नेक्स्ट emitter current देख लेते हैं।
सो एमिटर करंट के लिए सिंस हम IC निकाल चुके हैं, अभी तक हमने दो रिलेशंस निकाली हैं, IC इज IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VBE by VT एंड IB इज IC ओवर बीटा। सो नेक्स्ट हम IE के लिए रिलेशन निकाल लेते हैं। सो IE के लिए रिलेशन निकालना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट्स कंसीडर दिस ट्रांजिस्टर एज अ सुपर नोड and let's write an equation for all the currents entering the supernode and all the currents exiting the supernode. Direction हमने already established कर दी है. IC has to be the current entering into the collector because it is because of the electrons. Electrons are negative. Electrons are getting out of the collector. So collector current must be in the opposite direction into the collector terminal. Base current is comprised of two terms which both are whole current, and as holes are flowing into the base terminal, so the base current must be into the base terminal. So IB is into the base terminal. Emitter current is also comprised of two terms. One is because of the electrons which are flowing into the emitter, so that's why emitter current का जो electron part है वो out of the emitter है, और second part whole current का है वो भी out of the emitter है. So emitter current overall is out of the emitter. जी, तो बाय KCL ऑन दिस सुपर नोड क्या इक्वेशन आनी चाहिए? हाँ जी, सुपर नोड पे लगाइए जरा KCL। कौन कौन से करंट्स हैं एंटरिंग द नोड एंड विच करंट इज एग्जिटिंग द नोड? Sir, emitter current will be equal to sum of the remaining two currents. एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आपके पास IE इज द ओनली एग्जिटिंग करंट, अदर टू आर एंटरिंग करंट, सो इट इज इक्वल टू IB प्लस IC. So IE is equal to IB plus IC is the relation for the emitter current. So let's get the emitter current relation भी इस फॉर्म के निकालते हैं. Let's substitute here. IB is IC over beta plus IC, or we can rewrite it as 1 over beta plus 1. So there is some constant involved here as well. So let's simplify 1 plus beta by beta plus 1, or it is equal to IC divided by beta plus 1. Let's call this constant as alpha. So we have where alpha is equal to beta by beta plus 1. So we have the third relation, IE is equal to IC over alpha, where alpha is beta by beta plus 1. So ये जो नया हमने कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस किया अल्फा, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू बीटा, it can be determined by beta, and it is beta divided by beta plus 1. So since beta is large 50 से 200 के बीच में होता है, so उसको अगर आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखें तो you will find out कि अल्फा will be close to unity but always smaller than unity. ठीक है, बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 है ना, बीटा 100 है, ये 101 है, सो एक 100 को अगर आप 101 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट अ रिजल्ट विच विल ऑलवेज बी लेस देन 1 बट क्लोज टू 1, बिकॉज बीटा इज सिग्निफिकेंट, बहुत स्मॉल नंबर नहीं है. सो अल्फा विल बी ऑलवेज लेस देन 1 बट क्लोज टू 1. सो अल्फा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा इज द रेशियो ऑफ IC एंड IE. सो अगेन इट्स सम करंट गेन एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट गेन. वाई? बिकॉज आपने बेस को रेफरेंस ले लिया और बेस के अलावा बाकी जो दो करंट्स थे उनका कंपैरिजन कर लिया. सो अल्फा इज IC डिवाइडेड बाय IE एंड इज कॉल्ड द कॉमन बेस करंट गेन. सो दिस इज कॉल्ड कॉमन बेस करंट गेन. So alpha is less than but very close to unity. So alpha will always be less than unity but very close to unity. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि since IE is IC over alpha, so IC is equal to alpha IE. So alpha basically indicate कर रहा है कि IC will always be smaller than IE. So IC हमेशा IE से smaller होगा क्योंकि IC में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है, IE में होल्स का कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है. So IC will always be slightly less than IE. सो बीटा को भी अल्फा के टर्म्स में रेडिली लिखा जा सकता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये रिलेशन है जो याद रखें, ध्यान में रखनी है. सो एज अ समरी वी हैव दीज आर द रिलेशंस दैट वी हैव. सो एज अ समरी नोट करें, हम जस्ट यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर की भी हमने बात की है, PNP की भी बात नहीं की,
और जस्ट हमने एक्टिव मोड के लिए बात की है। अभी सिर्फ हमने इसको कवर किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड। अभी हमने सैचुरेशन मोड को कवर नहीं किया। सो दीज रिलेशंस आर ओनली वैलिड फॉर एक्टिव मोड, ये सिर्फ एक्टिव मोड के लिए वैलिड है। सो क्या क्या रिलेशंस हैं फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर operating in active mode? We have IC is equal to IS exponential of VBE by VT, IB is equal to IC over beta, IE is equal to IC over alpha. Also, IE is sum of IC and IB, and alpha which is defined here is beta divided by beta plus 1. तो ये समरी है जो अभी तक हमने वर्किंग की है। तो ये रिलेशन हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें हमने बार बार यूज़ करने हैं। तो सॉर्ट ऑफ बीजेटीज़ के लिए ABC है, तो ये रिलेशंस आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप रेडली अप्लाई कर सकें। सो द कलेक्टर करंट इज IC is equal to IS exponential of VBE by VT. The base current IB is IC over beta. The emitter current IE is IC over alpha, where alpha is beta by beta plus 1. And also because of KCL applied on the supernode, we have IE is equal to IC plus IB. तो नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि इस NPN ट्रांजिस्टर को जब आप एक्टिव मोड में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहली रिलेशन हमारे पास है IC is equal to IS exponential of VBE by VT. So this type of behavior में हमें बताया जा रहा है कि कलेक्टर करंट इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय द बेस एमिटर वोल्टेज। सो एक डिफरेंट ब्रांच का करंट है जो कि डिटरमिन हो रहा है एक डिफरेंट ब्रांच वोल्टेज से। सो किस तरह का सर्किट कंपोनेंट आपके जहन में आता है इस बिहेवियर को मॉडल करने के लिए? डिपेंडेंट सोर्स है। एग्जैक्टली, इसको आप डिपेंडेंट सोर्स से ही मॉडल कर सकते हैं, बिकॉज द करंट इज डिफाइंड इन अ डिफरेंट प्लेस और VBE जो है वो डिफरेंट जगह की वोल्टेज है। सो वी नीड अ डिपेंडेंट सोर्स with the value of IS exponential of VBE by VT, with the control parameter that determines the value of this dependent source is defined somewhere else and is VBE. ठीक है, तो ये आपकी जो हमने तीन इक्वेशंस डेवलप की हैं उनमें से एक इक्वेशन थी IC is equal to IS exponential of VBE by VT. सो इस बाकी जो दो इक्वेशंस हैं उनको भी हमें मॉडल करेंगे और विल सी, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन अभी ज़रा से इस पे बात कर लेते हैं। सो इस रिलेशन को जो कलेक्टर करंट की रिलेशन है इसके लिए तो यू जस्ट हैव इन वन ऑप्शन विच इज़ अ डिपेंडेंट सोर्स which you can use to characterize the behavior of the collector current. रेस्ट के लिए हम देखेंगे कि आप या तो इस तरीके से एक डायोड प्लेस कर सकते हैं और IE को एक डायोड इक्वेशन से मॉडल कर सकते हैं, या आप IB को डायोड इक्वेशन से मॉडल कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम डेवलप करेंगे, अभी जस्ट हम मोटी बात कर लेते हैं कि ये रिलेशन हमने यूज़ करनी है एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिपेंडेंट सोर्स। उसके बाद वी हैव अ चॉइस, इधर वी कैन मॉडल IB as a diode current or we can model IE as the diode current. So इसमें से कौन सी हम इक्वेशन चूज करते हैं? इक्वेशन 2 को डायोड के तौर पे मॉडल करते हैं या इक्वेशन 3 को डायोड के तौर पे मॉडल करते हैं? डिपेंडिंग ऑन दिस चॉइस वी विल गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। तो एक को हम पाई मॉडल कहेंगे, इस केस में जो हमें मिलेगा उसको हम पाई मॉडल कहेंगे, और अगर हम इक्वेशन 3 को एज अ डायोड मॉडल करके यूज करेंगे तो विल कॉल दैट अ T मॉडल। सो इसको हम थॉरली नेक्स्ट टाइम डेवलप करेंगे। रिकॉल करें कि इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल का मतलब ये है कि वो इन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सो एनी सर्किट दैट कैन सेटिस्फाई दीज थ्री इक्वेशंस कैन बी कॉल्ड एन इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल फॉर दिस NPN BJT ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड। तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो देन वी कैन से कि हाँ यार ये ठीक है, ये इसका एक वैलिड मॉडल है। अगर इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन को वो वैलिडेट नहीं करता तो देन वी कांट यूज दैट पर्टिकुलर सर्किट एज द मॉडल। सो जब हम पाई मॉडल डेवलप करेंगे तो विल स्टार्ट विद दिस इक्वेशन 1, मॉडल इट बाय अ डिपेंडेंट सोर्स, and we will use equation 2
and model it as a diode, and then we'll verify equation 3. अगर तीनों satisfy हो जाएंगे तो हम कहेंगे हाँ यार ये ठीक है, this is a pi model and this is valid for an NPN transistor and NPN BJT operating in active mode. Similarly, जब हम T model develop करेंगे तो we'll start with equation 1 and equation 3 and later on we will verify equation 2. अगर तीनों satisfy हो जाएंगे तो again we will conclude कि that is a valid T model for an NPN BJT operating in active mode. So इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे. So आज का काम हम यहाँ पर एंड करते हैं. Any questions in this?